paper 2. Okay, paper 2, international relations. And international relations is very dynamic, and therefore you should be a regular reader of the newspapers, because if you are not reading newspapers, you cannot handle the IR questions. Fine. In the class, we will be building the basics, but by the time you will be preparing for your mains, lot of developments would have happened. So you should have capacity to analyze things on your own also. In UPSC exam, it is not about memorization. Memorization will not help. Ultimately, understanding will help. And what you have to grasp is not facts, but the underlying themes. For example, right now we are seeing crisis in Iran. For us, it is not important on which date what is happening. Rather, it is important to understand what is happening, why it is happening. Okay, so facts are there, but facts are just to support. Theme is even international relations is based on concepts. International relations is your subject. It is not current affairs. But when you understand that, you are aware of the developments, then you will be in a position to analyze, which in the language of political science we call it deconstruct. Fine. Now, international relations, there are 3-4 components of it. One is the comparative politics part, that is to be done later. Comparative politics part is to be done along with Indian government and politics. Plus, comparative politics is also sort of a political theory. It overlaps with that. Then there are theories of international politics and global politics. So in paper 2, section A, it deals with global politics, world politics, and section B deals with India's foreign policy, means understanding things from perspective of India. Suppose the developments in Iran, if they can frame a question in your section B, they can frame a question that how crisis in Iran will impact India's interests. They can ask specifically with respect to, let's say, Central Asia, with respect to Afghanistan. So in this way. But if I have to ask question in section B on Iranian crisis, what can be my question? My question can be how the contemporary crisis in Iran will impact the world order. Though these two things need not to be studied separately, and the focus of your studies should be on understanding the things.
Now, if you look at UPSC's previous year question paper, there is a difference in the last year's paper and years before. Last year's paper was very analytical paper, means there were no straightforward questions as it is from syllabus, means you have to apply your mind. So no question is going to be a cakewalk, in the sense you see the question and you respond. The PSIR paper has, I don't know about other papers, but there you have to see the question, you have to analyze, then only you can write answers. So no mugging up of the things, no rote learning, only understanding. And don't think that international relations can be understood only by the experts who write in newspapers. Fine. You can also be a equally good expert. So have confidence. Don't run after scholars. You are also a scholar. Anybody who studies is a scholar. Fine. So there is no need to run after some of the big names, be it Raja Mohan or Harsh, Vipan, whatever. Make your name big. Fine. So you need not to run after these commentators. The approach of exam is changing. Every year exam change. It is turning less elitist, in the sense less dominated by the scholars, etc. More how much you can think. What are your critical abilities? So we are starting with one of the most interesting part of this PSIR, that is international relations. And I believe that these classes will also help you in making sense of what's going on. And do you have interest in international relations? Because if you will not have interest, you cannot study. And if you have fear, then you cannot give your best. So two things keep in mind. Do you fear IR paper? Yes. Fine. So just leave this element of fear. डर के कुछ भी हो नहीं सकता है. और किस चीज का डर है? आपको ये डर होगा कि यू आर नॉट सी राजा मोहन, मैं कैसे समझ सकता हूं. ठीक है, तो यू हैव टू रिमूव दिस माइंडसेट. हो सकता है यू आर बेटर देन सी राजा मोहन. इज दैट क्लियर? तो किस चीज का डर है? डर हटाना है. एंड यू जस्ट enjoy international relations. I think the most interesting part of not just PSIR, entire UPSC preparation, and in time to come, even in your general studies, the weightage of this is going to be increased. And I believe that in time to come, they may separate the foreign services also, and a special cadre may come that is specifically dedicated for foreign affairs. This is not anything official. I guess this should be done because it is becoming a very specialized field. So take interest beyond and take a long-term view of international relations. Okay, so the first topic that we will start is changing international political order. And what I recommend, that if you will make notes on the loose sheets, it is always better, because you can keep on
updating. Sometimes from newspapers also you don't get time to make notes. So you can attach the article, anything that you like. So that is just for your convenience. So if I say loose sheet, don't start thinking I have not got loose sheet. अब तो दुनिया खत्म, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. घर जाकर के स्पाइरल से भी आप निकाल सकते हैं, फाइन, और रख सकते हैं. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक दैट आई विल स्टार्ट. अब कैसे करना है, हम बोलेंगे ऐसे लिखने नहीं लगना है, ठीक है. जब हम कहेंगे राइट तो राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट. इज दैट क्लियर? फाइन. तो जब राइट कह रहे हैं तभी राइट करना है. पहले चीजों को समझना है और डीकंस्ट्रक्ट करना है. तो योर फर्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर. तो यू शुड बी क्लियर विद ईच एंड एवरी टर्म. What is order? What is political order? If not political order, then which other order? Why this topic is specifically talks about political order? And out of entire syllabus of IR, this is the core, because on this is based every other topic. So in a way, what do we study in international political order? We are studying the history of the world politics. And why are we studying the history? Because history will help us in analyzing the trend, and on the basis of the trend you make theory. Fine. So theory of international politics, where is the resource of that theory? The events which are taking place. So these events are the laboratory to construct the theories. Okay, and that is the basic topic. So first of all, just write it down, the syllabus of this topic: changing international political order. Changing means you are going to study history, okay, of international political order. Anyway, what are the subtopics here? Fine. So first, rise of superpowers. Then strategic and ideological bipolarity. Next, non-aligned movement, aims and achievements. यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हर साल इसके ऊपर 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है. तो पॉलिटिक्स में nothing is happening, but there are so many questions on NAM. After that, collapse of USSR, unipolarity and American hegemony. And last, relevance of non-alignment in the contemporary world. Written. Now, these are all indicative themes, okay, and they will mold all these themes according to the contemporary developments. So exactly as it is,
Now the questions will not come like that. So very analytical questions. Out of these, the most important area that is to be understood is the game of American hegemony. Okay, so the maximum questions will be here. These are very static portions. So just have a look on the type of questions so that you are prepared. Means you don't have to be, we will study the timeline of Cold War, etc., just to develop an idea. But don't end up putting too much emphasis on that. Okay? क्या हुआ? ईरान की regime खत्म चल रही है अभी? हाँ? Okay, I thought. So understand questions. Questions कैसे होंगे? सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड करके अभी पूछते हैं. तो ऐसे सिनेरियो में आंसर का तरीका क्या होगा? If you have concepts, if you know word order means this, then only you can answer this question. तो conceptual clarity बहुत important है. So just like in 2024, they asked the changing global order and ongoing regional conflicts with the global powers taking sides have jeopardized the progress made towards disarmament in the past. So changing global order, you see so many, like every now and then the articles of newspapers, they will be discussing something on changing global order. Ongoing regional conflicts. So where regional conflicts are ongoing? Ukraine, fine, Gaza, Iran, is jeopardizing the progress made towards disarmament in the past. So what we have seen, Russia has tested nuclear weapon in 2025. US, Trump is also preparing for the nuclear testing. Fine. So very current themes are to be followed. Now identify the benefits of multipolar world order, because India talks about multipolarity. So what are the benefits? Means world order is very important theme. Okay. These are very regular questions. Rise and fall of Cold War. Who was Mr. X in international politics? Fine. How far efforts to maintain international order in post-Cold War era by UN has been successful? Means international order is changing. To what we see, UN has not been of any significant use or any use in crisis in Venezuela. So what is Venezuelan crisis? It is a rupture in international politics. It is showing a very different type, arrival of a very different type of international politics, where the leader of one country is held captivated by the other country. Fine. So the moment of rupture, they can ask moment of rupture or the moment of interregnum. What is the difference? Fine. Now non-aligned movement, they'll keep on asking normative ethos. NAM पर ऐसे सरकारी तौर पे उनको कहा गया है कि पूछते रहना. ठीक है, तो ये आएगा ही आएगा. NAM in IR is like women development in GS. ठीक है, तो हर एग्जामिनर को पता है इसके ऊपर पूछते रहना है, नहीं तो नौकरी खतरे में है. फिर expansionist tendencies of current Russian regime indicates intentions for realization of greater Russia on lines of Soviet era. इसका मतलब है कि जो भी करंट है, जैसे पुतिन की स्पीचेस हैं, शी जिनपिंग की स्पीचेस हैं, उनको फॉलो करना हमारा सिलेबस का पार्ट है. और ग्रेटर रशिया,
Ruski Mir, ये सब concept, this is all in Putin's National Day speech, etc. तो ये चीज़ें जब भी पेपर में आती है तो उनको आपको फॉलो करना है. Do you agree with the view US uses NATO as a traditional tool? Means NATO is also a part of our syllabus. So developments, future of NATO after in context of crisis in Greenland. Okay. Then American hegemony. What are the various constraints on American hegemony? What type of constraints? The rise of multipolar world order. A scholar that has written in contemporary times on the constraints of US hegemony is Brzezinski. So, global chessboard of international politics. So, there are certain prominent people who are writing on the constraints, critically examine the rise of China as a great power and its implication on Asian political order. Examine the decline of USA, if rise of China means decline of USA, these type of articles. Analyze the implications of Sino-American strategic rivalry for South and South Asian regime. So any example of South Asian, any example you know of Sino-American strategic rivalry for South Asia? Taiwan is in South Asia. अरे मूर्ख लोग, पहलगाम भूल गए तुम लोग? पहलगाम टेरर अटैक किसका पार्ट है? पहलगाम में पाकिस्तान के पास किसके वेपन्स थे? तो क्यों है? तो साइनो अमेरिकन क्यों है? क्योंकि चाइना को चाहिए सीपेक कॉरिडोर, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए. डिस्कस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रम्प्स अमेरिका फर्स्ट एंड शी जिनपिंग्स चाइनीज ड्रीम. देन हाउ, ये क्या टॉपिक है? आर्म्स रेस और यूएस हेजेमनी को कंबाइन किया है. Development of advanced missile technology and nuclear threat by North Korea has challenged American hegemony. तो आज international relations is which type of top subject? Very multidisciplinary. तो और international relations को अगर पढ़ना है तो सबसे ज्यादा क्या फॉलो करना है? न्यूज़पेपर में क्या फॉलो करना है? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, ठीक है. तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या वॉर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वॉर इज अ गेम ऑफ टेक्नोलॉजी. सो हाउ न्यू डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज लाइक AI, ड्रोन, लेजर वेपन्स एक्सेट्रा, ASAT technology is a game changer. So science and technology you should study for IR also. Okay, quantum, AI, collapse of USSR, ये तो old है. Ukraine crisis, identify the challenges to US hegemony. तो क्वेश्चन देख के डर लग गया क्या? यस, नहीं लगा. डर के होना क्या है? तो इसे अच्छा नहीं लगे, ठीक है. तो क्या समझ में आया? जो भी पेपर में आ रहा है सिलेबस इंडिकेटिव है. सपोज आर्मीनिया अजरबैजान में कोई वॉर है तो इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. एंड इन प्रीवियस ईयर्स व्हाट हैज हैपेंड? इंडियाज एंगेजमेंट हैज increased to every region like Caucasus, Central Asia. Earlier we were not interacting with European countries so much. So now our foreign policy has really become global in its geographical scope. Okay, so everything can be interlinked, whatever developments are taking place. So now let us start this understanding this thing.
तो अभी हम पहले पढ़ेंगे चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर. ये लिखो पहले, चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर. मैम देयर इज अ क्वेश्चन मैम. अरे अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ. नो इट्स अ काइंड ऑफ सीरियस क्वेश्चन दैट्स इट. ओके. वो जो न्यूज करंट ओरिएंटेड जो बोले जो बाद में सफल कर जाएगा, तो उसके लिए न्यूज़पेपर इनफ. नहीं, स्टेटक्राफ्ट. स्टेटक्राफ्ट, या दैट्स व्हाई आई वाज कंफर्मिंग मैम, या कि a statecraft would be better or newspaper. Get doubly confirmed. Fine. So you require a statecraft. Ma'am, I'm asking now, only a statecraft is enough or At least a statecraft. at least? At least. मतलब we have to combine with newspaper, yeah. Yes, yes. Thank you, ma'am. Very nice question. Fine. ठीक है. तो अब हमको समझना है changing international political order. So first of all, we should understand concept of order and then political order. So in your syllabus, if topic 7 is about political order, topic 8 is about economic order. Just listen. So topic 8, what is the area? WTO, IMF, World Bank. So in the most simplistic sense, if I have to define international political order, I can use one word, and that is geopolitics. And if I have to analyze the economic order, then I can use one simple word, that is geoeconomics. So the two basic conceptual frameworks to analyze international politics is either geopolitics or geoeconomics. So when we talk about geoeconomics, we talk about markets. In geoeconomics, there is a role of MNCs. If you talk about US, India, FTA, so we are in the domain of geoeconomics. If we talk about BRICS, it is geoeconomics. When we talk about Quad, or you talk about LEMOA agreement with US, so it's all about geopolitics. So primarily you study international politics through geoeconomics, geopolitics, as well as there are certain, like the next topic is United Nations, etc. That is related to international law, norms, soft power. So international politics or any politics, it has to do with power. And power is of three types. The military power, when we study about military power, then we are studying geopolitics. When we are studying about economic power, then we are studying geoeconomics. So the geoeconomics topics of your syllabus is global, international economic order like WTO, etc., as well as the regional organizations like APEC, NAFTA, ASEAN, EU, etc. And the third part is the normative power or soft power. There, issues like democracy, human rights, gender justice, these type of issues. So broadly, the entire syllabus is neatly classified under three heads: geopolitics, geoeconomics, and the concept of normative power or soft power. But the oldest politics is geopolitics. So we are talking about politics. So politics here means which power?
the muscle power and the diplomatic power, political power and the military power. It's what we study in geopolitics. But primarily geopolitics, you study about military power. Fine. So Kautilya, Kautilya's Arthashastra, Kautilya's Mandal theory is theory of geopolitics. So what is the content of Kautilya's work? The strategy of war. Fine. So politics and war are very closely integrated. So what is the root cause of war? Politics. Okay. So it is the politics that is leading to war. And that is why at times, if you see traditional international relations, when lot of trade, market integration was not there, so it was all about military power, geopolitics. Okay. But gradually the nature in which international politics is operating is also changing. So from geopolitics to geoeconomics. Again, we are coming back to the age of geopolitics, because what we see, collapse of WTO, and we see the countries are using the muscle power. So what we have seen US doing in Venezuela. So you can get a question that, do you think that in present time, geopolitics is dominating over geoeconomics? Because we all understand that when US is going for tariff wars or increasing tariffs over India, obviously this may harm USA's economic interests. But at the same time, the vision is more about geopolitics. So right now what we are witnessing, lot of geopolitics, lot of money, lot of muscle power, the military power, mobilization of forces, arms race, these type of things are defining the politics today. Fine. So changing international, if I have to use one word for political order, what is that word? Geopolitics. So first you write the concept of geopolitics. Okay. So how do we employ the word geopolitics in international politics? जब लोग international relations में geopolitics word use कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? तो geopolitics is the अभी लिखो नहीं, पहले समझो. It is the most commonly used term in international relations. And what does that imply? In simplest sense, geopolitics can be equated with foreign policy. Fine. So if I have to say I am interested in learning India's foreign policy, but if I have been a student of international relations, I will not use layman term. I will say I have interest in following Indian geopolitics. Fine. And foreign policies. First and foremost thing, what is the objective of foreign policy? Balance of power. Fine. So what is international politics? It is all about maintaining the balance of power. So the other way term geopolitics is used is also for balance of power. For example, recently there has been a book by Shyam Saran, Asian Geopolitics. So Asian Geopolitics is about analyzing US-China relations and India, US-China-India relations. So geopolitics is all about balance of power.
Fine. So if I have to use balance of power, I will preferably use the term geopolitics. Fine. So geopolitics, how it is used in international relations in two ways. Fine. The first is, right, foreign policy. Second way, how do you use it? Balance of power. Now, what type of concept is balance of power? Understand that. Do you balance politically or do you balance militarily? Not politically. Fine. So, balance of power is a militaristic concept. पहले सुनना है. तो balance of power, how do you achieve? What is the means of balance of power? Your military, your defense equipments. Fine. So, military power. So, balance of power, what do you see nations are doing? They are trying to balance the power. And what is the way to balance the power? Arms race. So, what is happening right now? Arms race. Fine. So, balance of power is basically the concept of military. And how do you achieve balance of power? Through arms. Because ultimate determinant of power is the military power. Fine. And how do you get arms? Either, what are the techniques of balance of power? Either internal, on your own, or if you are not in that position, then you go for external balancing, you go for alliances, you go for strategic partnerships. For example, India-Russia strategic partnership is what? External balancing. So, India-Russia strategic partnership balances what? It balances whom? America or China? China more. Fine, we are giving too much importance to Russia because we don't want Russia to go with China. We don't have to balance with US. So our approach is China centric. Fine. So what we want because of our dependency, and there is a huge probability of India-China war, and our dependency on Russia, that's why we are giving so much importance. And we are still so much, our defense is so much interdependent on Russia. Fine. So what, as of now, you have to understand with balance of power is that it's a militaristic concept. And how do you achieve it? What are the techniques of balance of power? The most common technique is through arms race. Fine. So geopolitics means what? Balance of power. And balance of power is a militaristic idea. What does this denote? Arms race. Okay. Now, political order, you understand? Geopolitics. Fine. And geopolitics is all about wars, etc. That's why they are asking about war in Ukraine, war in Gaza. We have to understand these wars. We have to understand new types of warfares. And here your syllabus you can do simultaneously with your security topic of paper 3. Fine. So war is very important. Now the concept is order. What does order means? Fine. And we have to understand the changing order. So just before present things which are happening, how was the world order? It was unipolar world. But right now what is happening? Multipolarity is emerging. So
how world order is changing, why world order is changing, that is the question. Fine. So now we have to understand concept of order. Now you write concept of order. What is order? So write order is a conceptual framework used in discipline of international politics to analyze various developments. ठीक है, आप लिखो द टर्म ऑर्डर is employed in two ways. There are two ways you use the term order. Okay. So what are these two ways? First, in descriptive sense. Descriptive sense. And second, in normative sense. So descriptive sense, like how do you use, what are the terms that we use when we employ this term in descriptive sense? Okay, so here we use the concept of polarity. So what does polarity defines? Right, distribution of power on the globe. How power is organized on the globe. Fine. So we have three primary models of polarity. Fine. Unipolarity, unipolarity means ऐसे लिखो, all power is concentrated at one place. That is in a single state. So single state having all power means ऐसे लिखो, when there is single superpower. What is superpower? How will you define superpower? Write it down. ठीक है. Superpower means extraordinary power. बात ही कुछ और है ना. सुपर पावर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, सब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, स्टाइल एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी. फाइन. तो सुपर पावर मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर. तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर
मीन्स पहले समझना है, द गैप बिटवीन powers of the gap between the power of superpower and that of others is so big that rest of the countries, even they come together, they cannot balance the superpower. Fine. Only superpower can balance superpower. Okay. तो सुपर पावर होने का क्या क्राइटेरिया है? क्या क्राइटेरिया है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो बाकियों की क्या नहीं होनी चाहिए? औकात। ठीक है, सुपर पावर सबको अपनी औकात दिखा सकता है और सारे मिल करके भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो चाइना, रशिया, इंडिया, बाकी सब कुछ नहीं कर सकते। यूएस को लाना था, माडुरो को ले आया। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? extraordinary. Which other country can dare to do so? Huh? Who? No, India is Vishwaguru. Teacher doesn't do these type of things. तो कौन है अभी भी सुपर पावर? कौन है? यूएस है। सुपर पावर समझ गए, दिमाग में बैठ गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यानी बंदे में है दम। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, वन सिंगल पर्सन कैन others together, like Gandhi was a superpower. अंग्रेजों की पूरी फौज कुछ नहीं कर सकी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। तो सुपर पावर का क्या होता है? भौकाल, जलवा होता है, जलवा होता है उसका। जिसका जलवा है वो सुपर पावर है। ठीक है, तो ऐसे समझना है सुपर पावर। तो सुपर पावर अभी भी कौन है? यूएस। तो किसी को डाउट होगा कि यूएसए इज नॉट सुपर पावर। ये सब जो कुछ लोग आर्टिकल लिख रहे होंगे, मल्टीपोलर वर्ल्ड, दिस दैट, तो इन सबको चुप कराने का एक ही तरीका था। क्या? माडुरो को उठाओ और दिखाओ, कर लो जो करना है। फाइन। तो आफ्टर दैट there is no point of writing all these articles that the world is becoming multipolar, etc. Fine. So US is a extraordinary power. US is still superpower, and that is why it will be a huge mistake for India if we again alienate US. So it's better not to go against superpower. So when there are normal powers, you can do balancing. But when there is superpower, you have only one option, and that is bandwagoning. ठीक है, उसकी पार्टी में जाओ और साथ में, मतलब बैलेंस, सुपर पावर को बैलेंस करना इज फुलिशनेस, एंड नो पॉइंट emphasizing on strategic autonomy vis-a-vis superpower. So India needs strategic autonomy against China, not against US. That's not possible. Fine, because US is extraordinary power. So what should you do with superpower? You should use the strength of superpower for building your own strength, the way China has done. So Indo-US relationship can be a force multiplier for India to strengthen India's capacity. Now, when you are dealing with USA,
obviously, international politics is not a place for altruism, that you expect everything for free. So there is going to be a deal. There has to be an exchange. So India has to offer something to get something in return. And we have to decide what exactly is the urgency of India. So the urgency of India is that we are in a very challenging neighborhood. And we have already seen that China has tried to test what was Pahalgam. That was trying the state of India's preparedness. Fine. And it was just, they wanted to see how things will take place. India's preparedness for, because in future, where India stands in terms of internal security, in terms of external security, and above all, global political support. How many countries are on India's side and how many countries are on the other side? So that's why our Prime Minister says Operation Sindoor is not finished. It's not complete. It cannot be completed because that was just to test each other's preparedness. And very soon you can expect something bigger. And in the present scenario or in any scenario, if you want to avert war, you have to be prepared for war. So preparation of war, the balance, like China has grown so much that it is challenging US. To balance China, we need USA's support. We cannot balance China simply with the help of Russia. So Russia can help India in fighting the continental war because Russia is a land power. But Russia is not a maritime power. And we need US support in managing the maritime challenge. And Chinese activities in Indian Ocean have increased, Chinese presence have increased around the entire Indo-Pacific. And China has developed, China's Make in China 2025 has given huge edge to China in the disruptive technologies and the new warfare. So what is a big concern for India? China's underwater capabilities, China's underwater drone capabilities. Because what is our main means through which we want to manage the China challenge? That is through nuclear weapons. Now, the most important part of nuclear weapons is the sea-based nuclear weapons. So what China is targeting? India's sea-based capabilities. So what also we can see a continuous arms race between India and China is also going on, but luckily we are not the prime target, and China has many other things to manage. Comparatively, India has lesser things to manage. If we manage our domestic front, that can be much of great help. So China has to manage many things. India has to manage only China or Pakistan, which has become one. Fine. So you have to move very strategically. So what is the most important area, like where you cannot ignore US? Okay. And
the destiny. It is said that the destiny of the 21st century will be decided on the waters of Indian Ocean. Okay, so in Indian Ocean, the main parties will be what? Not US and China, but India and China. So for complementing the maritime power, India is very much like India is very happy with BRICS, but we cannot ignore Quad also. That how important it is. Like if BRICS is in geoeconomics, then Quad is equally important for geopolitics. Okay, fine. So you understand the definition of superpower, what you have written, extraordinary power. इसके आगे लिखो, लिखो the gap between the power of the country that is superpower and other countries is so big that other countries, even when they combine, cannot balance superpower. ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो, लिखो if balancing is not an option, vis-a-vis superpower, then what is the option? What is the option? Right, bandwagoning. अगर उतना बड़ा पार्टी ना कर पाओ, किसी अमीर इंसान की पार्टी में डांस करके आ जाओ, बैंड वैगनिंग, या तो अंबानी जितनी पार्टी कर लो, ठीक है, जहाँ पे इंटरनेशनल सुपरस्टार आ रहे हो, ठीक है, क्या फायदा उससे compete करके, बेहतर है उन्हीं की पार्टी में घुस जाओ, खावा के आ जाओ, ठीक है। तो पहले समझना है फॉरेन पॉलिसी, बैलेंसिंग, बैंड वैगनिंग, तो औकात देख के झगड़ा किया जाता है, औकात देख के बैलेंसिंग की जाती है, ठीक है। पहले औकात देखो, फिर आगे बढ़ो। यस, जैसा है, तुम्हें क्या लग रहा है मोदी जी गलत कर रहे हैं? हमारे देश में मोदी जी हैं, सब सही चल रहा है। इंडिया का जो रिलेशन है, मतलब कि किसी भी टाइम चाइना के साथ, ये यूएस के साथ अच्छा होता है, तो रसिया के साथ थोड़ा इधर उधर हो जाता है। और कुछ नहीं इधर उधर होता है, ठीक है, सब सही है, ठीक है। यू आर इन द सेफ हैंड एंड यू आर अंडर द ग्रेट लीडरशिप, डोंट वरी। तो क्या दिक्कत क्या है, सब तो सही है। और चाइना, हमारा कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। रशिया के साथ तो खुद ही ट्रम्प चाह रहा था दोस्ती हो जाए, तो सबके लिए अभी थ्रेट कौन है? चाइना। तो हम मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमने यूक्रेन पे तो साथ नहीं दिया यूएस का, लेकिन ईरान पे तो देना चाहिए। कम से कम यूएस के सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ तो करो। तो हम होते तो दो काम करते,
एक तो वेनेजुएला में बोलते कि भाई बहुत सही किया, है ना, डेमोक्रेसी थी नहीं वहां पे। तुम्हारे लिए तो यूएस ने अच्छा ही किया भाई, चाइना का इन्फ्लुएंस कम किया। तो हमको ऐसे उसको लिखना चाहिए था, ट्वीट करना चाहिए था कि भाई थैंक यू, यू प्रूव्ड योरसेल्फ एज आवर फ्रेंड। ठीक है, और ईरान पे कम से कम वी सपोर्ट यूएस कंसर्न फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। ईरान ईरान तो एक छोटा सा देश है ना, आप उसको तो अपने उसमें तो एक दो स्टेटमेंट कर ही सकते हो जिससे यूएस खुश हो जाए। और मान लो ये रेजीम कोलैप्स हो गए तो ये क्या, फिर तो प्रो यूएस रेजीम में आएगी। तो आप अगेंस्ट ईरान नहीं, लेकिन अगेंस्ट एग्जिस्टिंग रेजीम तो एक स्टेटमेंट कर ही सकते हो। अरे छा बहार तो नया वाला बहार है, ठीक है, छा बहार जहां है वही रहेगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू समथिंग विच सेटिस्फाइज यूएस ईगो। Then aren't we supporting the anarchy? Fine, you have to give primacy to your national interest, not the principles. International politics is not about principles, it is about your national interest. Fine, so principles do not matter. In the long term can be being in the side of Venezuela because of oil. आह को चाहिए एक उम्र असर असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, है ना। लॉन्ग टर्म में नहीं, सामने जो मिल रहा है लेके लूट के भाग लो। लॉन्ग टर्म में सब भूल जाते हैं भाई। जापान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन डाला तो क्या जापान और यूएस का संबंध खराब हो गया? नहीं हो गया। शॉर्ट टर्म इज लॉन्ग टर्म ईयर। ठीक है, जो सामने है लेके निकल लो, ये अपना सिद्धांत बना लो लाइफ का। ठीक है, लॉन्ग टर्म ये सब आइडियलिस्टिक टाइप बातें करनी नहीं है, वो भी तब जब आप मोदी जी के इंडिया में रह रहे हैं। नेहरू वाले इंडिया में थोड़ी रह रहे हैं आप। मैम मैम satisfying US ego is equivalent to bandwagoning to US only. यस, बैंड वैगनिंग इज इंपॉर्टेंट। दोस्त की शादी में नहीं नाचोगे तो किसकी शादी में नाचोगे? तो दोस्त है, दोस्त की शादी में ही तो बैंड बाजा बाराती होता है भाई। तो अब चलो, दो चीजें करनी। Thank you, ma'am. फॉरेन पॉलिसी, जियोपॉलिटिक्स मीन्स फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी में जो छोटे मोटे लोग हैं उनसे क्या करना है? बैलेंसिंग। जो बड़े लोग हैं उनके साथ बैंड वैगनिंग। और ये दोनों जियोपॉलिटिक्स का एस्पेक्ट्स है। और सुपर पावर के साथ भिड़ना नहीं है। वाई? बिकॉज ओनली सुपर पावर कैन बैलेंस सुपर पावर। ठीक है, लास्ट ये लिख लिया। इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब ही जियोपॉलिटिक्स है। वो तो ट्रेड रेट बाद में आया ना। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या माना जाता था? बैलेंस ऑफ पावर। तो बैलेंस ऑफ पावर कब होता है? जब सब बराबर के लगभग हो। लेकिन सुपर पावर के साथ बैलेंसिंग नहीं होती। क्या होता है? बैंड वैगनिंग। तो अब समझ में आ गया यूनिपोलर वर्ल्ड। लास्ट लाइन लिखो, ओनली सुपर पावर कैन बैलेंस सुपर पावर। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ पोलैरिटी इज व्हाट? यूनिपोलैरिटी। नाउ द सेकेंड इज बाइपोलैरिटी।
Bipolarity means when there are two superpowers. The Cold War era was what? Bipolar. Fine. And the third is multipolarity. ठीक है, अब लिखो डेफिनेशन ऑफ मल्टीपोलैरिटी क्या है. व्हाट इज द डेफिनेशन? लिखो राइट, व्हेन देयर आर मोर देन टू मेजर पावर्स. ठीक है, अब लिखो मल्टीपोलैरिटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स. Balanced multipolarity and imbalanced. So when the distribution of power is roughly equal, then it is balanced. But when, for example, still there is a gap between US and China, China and India, then the multipolarity is not that balanced, and the foreign policy will be more complex and challenging. So one way we study the world order, because once you are understanding the world order, then only you can understand which event is taking place why. तो ये बेसिक कंसेप्चुअल टूल है जिससे इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना स्टार्ट किया जाता है. ठीक है, तो इसका एक तरीका क्या है? डिस्क्रिप्टिव, या जब हम मटेरियल टर्म्स में बात करते हैं, और बिकॉज वी आर मेजरिंग मटेरियल पावर, द मिलिट्री पावर, तो you can also call this descriptive, plus you can also call it as material distribution, material explanation, material terms. ये materialistic explanation है. Material मतलब concrete, कितना material है, कितने weapon है, कितने tank हैं, कितने aircrafts हैं. आ गया समझ में? तो ये मटेरियल का मतलब क्या होता है? मेजरेबल. फाइन, मेजरेबल. तो व्हाट you will do, you will go home and see there is a Lowy Institute of Australia which publishes the power index based on the material and economic, but primarily material. Fine. तो पहले लोवी इंस्टीट्यूट पावर इंडेक्स और क्या गैप है, यू शुड हैव आइडिया ऑफ दैट. ठीक है, थोड़ी जगह छोड़ के पढ़ के कल बताना. ठीक है, और ये हर साल आप अपडेट करते रहिए जब तक यूपीएससी कर रहे हैं. ठीक है, ओके. तो अब हम नॉर्मेटिव वे में बात करते हैं. नॉर्मेटिव वे में बात करने का मतलब है, जस्ट लाइक राइट नाउ, एवरी नाउ एंड देन यू हियर द डिक्लाइन ऑफ द लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, और like India also says we should protect the liberal world order. The concept of Indo-Pacific came to preserve the liberal world order. So
who was disrupting the liberal world order? China. And who has established the norms of liberal world order? US. तो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के नॉर्म्स पहले किसने चैलेंज करना चालू किया? चाइना ने. तो जो मेन प्रॉब्लम है वो चाइना है. ठीक है. तो यूएस तो केवल माडुरो को ले गया. चाइना तो टेरिटरी पर क्लेम करता रहता है. चाइना साउथ चाइना सी की इतनी टेरिटरी अपनी बना लिया. वो किस मुंह से चाइना बोलेगा ट्रम्प को, और क्यों बोलेगा? तो चाइना ने कौन सा लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर नॉर्म्स फॉलो किए? वॉज गलवान China was following, observing the sovereignty? No. So who is China to make any comments? And I think US is doing good in teaching lesson to them. Fine. So you should wholeheartedly support what US has done in Venezuela. ठीक है. अपने दोस्त के लिए चीयर लैंडिंग तो करनी चाहिए कि नहीं? क्या करते आप भाई? वर्ल्ड ऑर्डर को डिसरप्ट पहले चाइना कर रहा है, और चाइना हैज स्टार्टेड दिस साउथ चाइना सी एंड दिस टाइप ऑफ तमाशा फ्रॉम लाइक इन सेनकाकू आइलैंड इन साउथ चाइना सी. तो चाइना इज मेकिंग द क्लेम्स ऑन द टेरिटरीज ऑफ अदर कंट्रीज. And India, obviously, Shaksgam Valley, Arunachal Pradesh, every now and then. मैम ऐसे तो चाइना अरुणाचल प्रदेश के सीएम को भी उठा के ले जाएगा. अरे इंडिया क्या वेनेजुएला है? नहीं. और मोदी जी क्या माडुरो हैं? ऐसे देखते रहेंगे? अभी तो वही कर रहे हैं, कुछ तो बोल नहीं रहे. अरे तो जब बोलने की जरूरत होगी क्या बोलेंगे और क्यों बोलेंगे? It is better, like if speech is silver then silence is golden. ठीक है. तो मोदी जी अभी शांत हैं, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति है. और आके दिखाए चाइना अरुणाचल में. ठीक है. तो भाई अच्छी बात है, आज चाइना की बातें को आपको चैलेंज करना चाहिए. और चाइना ने टेरिटोरियल क्लेम्स करे. चाइना इफ यूएस तो क्या उठा रहा है? एक डिक्टेटर को उठा रहा है, एक नार्को टेररिस्ट को उठा रहा है. चाइना तो तुम्हारा लैंड और रिसोर्स उठा रहा है. इसके बाद वेनेजुएला में डेमोक्रेसी आएगी, लेकिन जो लैंड चाइना ले जाएगा वो कैसे वापस आएगा? तो दुनिया को पहले चाइना से क्वेश्चन पूछना चाहिए. तो यूएस इज गिविंग बिफिटिंग रिप्लाई टू चाइना. देन इट इज नॉट लेटिंग, लाइक इट्स नॉट ट्राइंग. देयर इज नो पॉइंट. यू शुड नॉट. समटाइम्स इट इज बैड टू बी गुड. अरे तो जब सारे लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं तो यूएस की ने थोड़ी ठेका ले रखा है. China is the problem. China is creating problem everywhere. China is not playing the fair game. China is doing currency manipulations. China is not following the IPR and other norms. China is threatening every country's security. Multilateralism. US has not destroyed. China entered into these institutions and used its pockets to corrupt the bureaucracy of WHO and the organizations from which US is saying we are coming out. So you should blame China, you should not blame US. At least this is what US has to do. आ गया समझ में? अब आगे बढ़ो, एक दोस्त की बात समझो. ठीक है. ये तो क्लियर है ना कि यूएस चाइना अपना दोस्त नहीं. इतना तो क्लियर है. यूएस दोस्त है या नहीं पता नहीं, लेकिन यहां तो क्लैरिटी है.
तो चाइना की ऐसा कोई भी काम अपने को करना ही नहीं है जो चाइना के फायदे का हो. ओके, तो चाइना, बिकॉज दैट इज अपीजमेंट ऑफ चाइना. Why should we appease China? We should appease, if we have to appease US. Why China? The other word for appeasement is bandwagoning. So there is no point going for appeasement of China. And India will not benefit, India will not get benefited with BRICS. We will be benefited with, we are with US. ठीक है, तो इस बात को समझना होगा. बाकी तो US is disrupting. Why? Because India continued to buy oil. So the oil US, Russia is having money, Russia will continue the war in Ukraine. So what China wants, entire world to be focused on Ukraine, and China keeps on doing in Asia Pacific whatever they want to do. So to weaken China, and then what will happen? Russia has money, Russia will purchase things from China. So if you want to stop the rise of China, you have to stop the countries from buying Chinese. And when India will give the money, so what is happening? Our money is going to Russia, and from there it is going to China. You have to break this trail. So India should not have supported, or India should have at least not opposed, or India's policy has been what, dilly-dallying, not a clear-cut policy. And what was the problem? India could have supported Ukrainian thing because you show yourself the voice of global south. तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी थी. खैर तुम लोग से ज्यादा समझ की उम्मीद नहीं, आगे बढ़ते हैं. तो नॉर्मेटिव का मतलब क्या हुआ? व्हेन वी, सुनना है पहले, व्हेन वी एनालाइज वर्ल्ड ऑर्डर on the basis of norms, like certain values, certain principles on which the order is based. So what was the norm on which that order was based? Liberal world order. Okay, so if liberal world order is changing, then also world order is changing. Okay, so liberal world order, who has established? US. So liberal world order is also called as American world order, Pax Americana. So what China wants to do, Pax Sinica, China led order. तो China led order कैसा होगा? चाइना कैसा देश है? कम्युनिस्ट नहीं है चाइना, एक्सटॉर्शनिस्ट है. ठीक है, चाइना क्या करेगा? Debt trap. China will make claims on your territories. China will never play the fair game. Okay, and China will not do public good. China has never done any public good. So Chinese order will not be good, at least not better than American order. That is why we supported concept of Indo-Pacific. Are you understanding this? Finding difficult? Okay, fine. So now when we will use normative word, fine. So normative means, ऐसे लिखो, when world order is described through norms. Norms means rules agreed upon by the units of the system. तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम, यूनिट इज स्टेट्स, तो यूएन और ये सारी चीजें जब हम उस सेंस में बात करते हैं. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर.
ओके, तो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, एरो करके लिखो, द चीफ आर्किटेक्ट of liberal world order was is USA. अब बताओ, does India support liberal world order? Fine. Is it mentioned in Indian Constitution? If not, word the concept. Yes, Article 51. So this is our constitutional vision also, the liberal world order. Fine. So this is how you explain it. So what we have to study? Changing world order, and why you need to understand the change, so that we can go for adjustments of our foreign policies. We need to decide whether India should be in BRICS or India should be in Quad. You can't take foreign policy decisions without understanding the nature of the world order. Fine. अब एक टर्म ओपन करते हैं, चेंजिंग. Changing means what? Changing means evolution. Evolution means history. History. Now, if I ask why to study history, लिखो, why to study history? To know international politics. लिखो, right? Because history is root and politics is shoot. Shoot, fruit. हिस्ट्री नहीं होती तो पॉलिटिक्स कैसे करते आप? ठीक है, तो हिस्ट्री के बिना पॉलिटिक्स नहीं समझी जा सकती. ठीक है, तो देयर इज अ क्लोज रिलेशन. दैट इज व्हाई you follow the chronological approach to analyze the things, and the मतलब when you study history, what is the purpose? ऐसे लिखो, history helps in analyzing the patterns in international politics. And why should you know the pattern? Right? Pattern, so that countries can frame their foreign policies proactively. एक ट्रेंड समझ में आता है, ठीक है, तो हम पहले से तैयारी करके रख सकते हैं. ओके, तो you have to, if you want to understand politics, you have to begin with history. Fine. So let us understand the history of the world politics. Right, subheading, history of the world politics. ठीक है, so as a subject, history writing begins when and where? Do we have a tradition of history writing? No. Fine. At least we have a tradition of mythology, not scientific history. Okay, so history is a subject in the West, in the Western world, that history writing has been there.
or otherwise let's not enter into the debate, but understand that when you are studying history or you are studying anything, you study from the perspective of the Western countries. So for world history, in the world history, do you study Indian history? No. So in the world history, we study European history. Okay? So history of the world and the way history is being written, and for that matter, any subject, it is called Eurocentric. So all subjects are Eurocentric. What does Eurocentric means? They are written from the perspective of the Western world and written on the basis of experiences of the Western world. So the non-Western world, हम जो भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें इंडिया और चाइना ये सब हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं. वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब है यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. ठीक है? क्यों? क्योंकि जो एकेडमिक्स है वो यूरोसेंट्रिक है. और इंटरनेशनल रिलेशंस कैसा सब्जेक्ट है? अमेरिकन सोशल साइंस बोला जाता है. तो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो स्कॉलर्स हैं वो कहाँ से हैं? थियरिस्ट कहाँ के? अमेरिकन्स हैं. तो आईआर पढ़ने का मतलब क्या है? अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पढ़ना. ठीक है? ये सब्जेक्ट किसने स्टार्ट किया? अमेरिकन्स ने. ये अमेरिकन सब्जेक्ट है, इसीलिए हम आज अमेरिकन मूड में. ठीक है? फाइन. तो आई स्टैंड फॉर अमेरिका टुडे. फाइन. तो अब हमको ये समझना है कि हमको पढ़नी है वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब कौन सी हिस्ट्री? देखो, वेस्टर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ द वेस्ट. वेस्ट ही है बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. ठीक है? हम लोग तो बारबेरिक थे, हम लोग को सिविलाइज करने आए थे सब. ठीक है? यूरोपियंस केम हियर फॉर सिविलाइजिंग मिशन. तो वेस्टर्न हिस्ट्री हमको पढ़नी है. तो वेस्टर्न हिस्ट्री ऐसे लिखो. देखो, वेस्टर्न हिस्ट्री इज ब्रॉडली divided into two phases and geographies. First है यूरोपियन हिस्ट्री. सेकेंड है अमेरिकन हिस्ट्री. फर्स्ट हिस्ट्री यूरोपियन और सेकेंड अमेरिकन. अभी तक हिस्ट्री बनाई किसने? यूरोपियंस. मून पे पहले कौन गया? यूरोपियंस, अमेरिकन्स. हिस्ट्री में कुछ भी याद रखने लायक जो है वो किसका कंट्रीब्यूशन है? वेस्ट का. ठीक है? हिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा? वॉर्स. ठीक है? तो यू स्टडीड वॉर्स, यू नो अबाउट नेपोलियन. ये सब दुनिया बनाई किसने? वेस्ट वालों ने. ठीक है? हिस्ट्री किसने बनाई? जिसके काम होंगे हिस्ट्री में लिखने लायक हो. ठीक है? तो आप किसकी बनाई दुनिया में रहते हैं? वेस्टर्न. आप कैसा बनना चाहते हैं? वेस्टर्न. ठीक है? इतिहास किसका है? वेस्ट का. इतिहास मतलब वो तारीख जो आपको याद हो. आप ये बता सकते हैं दैट Alexander came from Macedonia. Can you tell the place to which Porus belonged? Where?
north, northwest, 38 degree latitude. Name the place. हरियाणा में कोई शहर तो होगा, कोई गांव तो होगा, नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो तुम्हें ये नहीं याद रहेगा भाई इतिहास किसने बनाया, बस अंग्रेजों ने बनाया, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ द वेस्ट, ठीक है, ये मान के चलिए। आप लोगों ने ऐसा कोई कमाल तो करा नहीं कभी, ठीक है। तो एवरीथिंग द मॉडर्न वर्ल्ड, हु कंस्ट्रक्टेड द मॉडर्न वर्ल्ड? वेस्ट, ठीक है। तो आज से वेस्टर्न सुप्रीमेसी, ठीक है। तो हर इंसान क्या बोलना चाहता है? अंग्रेजी। कैसा दिखना चाहता है? फेयर एंड लवली, ठीक है। नो, कोई जाएगा वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ने पढ़ाने, तो भैया मान के चलो सुप्रीमेसी, ठीक है। लेट्स हैव नो इल्यूजन्स। तो दो ही लोगों ने ऐतिहासिक काम किए, पहले यूरोपियंस ने और उसके बाद अमेरिकन्स ने। तो अब यूरोपियन सेंचुरी लिखो या यूरोपियन हिस्ट्री। यूरोपियन हिस्ट्री सबसे पहले लिखो एंशियंट टाइम्स। एंशियंट टाइम्स, राइट, द बिगिनिंग ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। Where it started? Ancient Greece. ठीक है। So in ancient Greece, just write, there used to be city states. ठीक है। Now, write the most famous historical event of ancient Greece was Treaty of Westphalia हुई एंशियंट ग्रीस में, ठीक है। और द मोस्ट फेमस इवेंट ऑफ एंशियंट इंडिया कौन सा है? महाभारत, ठीक है। एनीवे, द मोस्ट फेमस इवेंट ऑफ एंशियंट, क्या बोला था मैंने, ग्रीस, वॉज पेलोपोनेशियन वॉर। Human history is history of war only. Peloponnesian War. That was the first World War, actually. Okay. So, Peloponnesian War, there were two leagues. ठीक है, two leagues, city states, they formed two leagues, and one was led by Athens. Another was led by Sparta. Who won the war? Sparta won the war. ऐसे लिखो, लिखो Sparta won the war. Athens versus Sparta. Athens क्या था? Maritime power. Athens was maritime power. Naval power थी उनके पास. And Sparta, continental power. Land power.
So normally who wins the war? Land power. Fine. So now the most famous work of the ancient Greece is the history of Peloponnesian War. And who is the author? Thucydides. Fine. So just write that. Right. The most famous work or the basic text of international politics, yeah, basic text of geopolitics, not internet, geopolitics is a history of Peloponnesian War, written by Thucydides. Thucydides. ठीक है. So ऐसे लिखो, what was the learning from this war? महाभारत की लड़ाई से आप क्या सीखते हैं? हाँ, क्या सीखा? सत्यमेव जयते, धर्म, war of righteousness. तो Western tradition and Indian tradition, they are opposite. So in Mahabharat, those who were following dharma or righteousness or ethics won, fine, but Thucydides tells there is no role of ethics, there is role only of power. So his famous statement is, in politics, strong do what they want to do and weak have to submit what they are supposed to. So what matters in international politics is power and not ethics. So no amount of argument of righteousness, etc., will work in international politics. What matters is your power. And powerful do not care for ethics. Rather, they define ethics. Okay. So no amount of states calling that it is unjust what Trump has done, that things carry no value. These are all hollow statements. What matters is power. So US has power, and if not now, when they are going to use their power? So if somebody has power, they should display their power. Fine. So that is the first rule of international politics. Fine. And this is the lesson that we draw from Thucydides. याद रहेगा? ठीक है. तो all is fair in love and war. Important जीतना है. ठीक है. एथिक्स मोरालिटी के टॉपिक बाद में पढ़ लेना. ठीक है. तो व्हाट इज मोरालिटी इन पॉलिटिक्स? पावर. ठीक है. तो स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे आर केपेबल ऑफ डूइंग एंड वीक सबमिट व्हाट दे आर सपोज्ड टू. तो ये पहला लॉ है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का. याद रहेगा जीवन में.
बस जहां से पावर बढ़ जाए ले लो, सही गलत ऊंच नीच देखा जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो हमें नहीं पता है कहाँ से बिलोंग करते थे भाई। I don't know, I cannot say anything, but it's a question is good. You are sure? But I am not sure. I don't know. इन्होंने लिखा है इतना बस पता है। ठीक है, इनका स्टेटमेंट लिखो, क्या जाना है इनसे, क्या सीखा, लिखो। हाँ, लर्निंग इज दैट what matters is power and not justice or ethics. What matters is power and not justice. You can keep on shouting for justice, justice, justice. Justice वस्टिस कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, एक शब्द सुना होगा, क्लाइमेट जस्टिस। ठीक है, तो हर वीक इंसान जस्टिस की बातें करता है। अगर आप जस्टिस की बातें करते हो, इसी से पता चलता है आप वीक हो। तो वीक हो ना हो, जस्टिस की बातें नहीं करनी। ठीक है, उससे इमेज खराब हो जाती है। चलो, तो इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इन एनी पॉलिटिक्स, people like power. If you see the behavior of Indian voters, the people with clean record and they have without criminal background and all, their chances of winning elections are very poor. ठीक है, तो more criminal record you have, you make your chances better. Fine. तो इसलिए आप ethics तो वैसे ही नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स। ठीक है, तो क्या देर इज नो रोल ऑफ एथिक्स। और इसका स्टेटमेंट लिखो, लिखो स्ट्रॉन्ग डू, आज से बस बाहुबली बनना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डू what they want to do and weak submit what they are supposed to. अरे आती है तभी तो देश इतना प्रगति कर रहा है, तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो। अरे बांग्लादेश पहले इनको खुश हो लेने दो, उसके बाद अभी थोड़े दिन बाद बताएंगे, जब अपना मूड आएगा। मूड बनाना पड़ता है ना। चलो, अब ये सब हो गया, इनसे सीख लिए इंपॉर्टेंस ऑफ पावर। अब ये जो एथेंस है, एथेंस इज व्हाट, एथेंस वाज रिविजनिस्ट पावर एंड स्पार्टा वाज स्टेटस क्विस्ट पावर। पहले ये समझना है। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी समझना है। किसी को समझ आना बंद हो गया तो बंद हो गया। एथेंस वर्सेस स्पार्टा। ठीक है, एथेंस क्या है, लिखो रिविजनिस्ट पावर है। एंड स्पार्टा स्टेटस क्विस्ट पावर है। So who is status quist? Who is revisionist? तो status quist का मतलब क्या है, आप लिखो those या the country which has established its dominance.
मतलब जो पुराने खिलाड़ी जिनका सरकार चल रही है, ठीक है, ठीक है। और रिवीजनिस्ट क्या है? द कंट्री विच हैज एक्वायर्ड पावर, जो नए नए पावरफुल बने, जैसे इधर दाऊद भाई हैं, छोटा शकील, छोटा शकील, यस, बस यही, ठीक है। तो इनका अपना कंपनी चल रही, ओके, और ये स्टेटस कोइस्ट ये चाहेंगे कि इनका सिस्टम बना रहे, और ये अपनी नई कंपनी बना रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो भाई स्पार्टा का एग्जाम्पल लिखो, यूएस। और सॉरी, रिवीजनिस्ट का लिखो चाइना। ठीक है। सो रिवीजनिस्ट मीन्स which has got power and which wants to alter the status quo, and status quoist power means which wants to maintain the status quo. So China is a revisionist power. How do you get to know China dream? So what is China dream? The China dream is Xi Jinping's dream, that the 21st century to be the Chinese century, and the dream is to displace US hegemony. And what is Trump's dream? To make America great again. Okay, so she versus he, fine. And okay, तो ट्रम्प क्या है? ही, फाइन। तो ट्रम्प ये सब नॉनसेंस ज्यादा टाइम बर्दाश्त नहीं करता है। तो ये कौन है आज के टाइम में? चाइना। और ये है अपने पुराने वाले लोग, यूएस। ठीक है। अब एक लिखो, ऐसे लिखो, व्हाट इज द, या व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट ऑफ द रिलेशंस बिटवीन यूएस एंड चाइना? या इसको लिखो, व्हाट इज द डेस्टिनी ऑफ यूएस एंड चाइना? इनकी डेस्टिनी में क्या लिखा है? क्या लिखा है? लिखो वॉर, लिखो वॉर इज द डेस्टिनी। ठीक है। अब लिखो, दिस इज कॉल्ड ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। Tragedy of great power politics. There cannot be two lions in Himalaya. ठीक है। तो एक जंगल में दो शेर नहीं हो सकते हैं। हिमालय मतलब इंडिया अपनी बातें करता है। ये कौन कहता है देयर कैन नॉट बी टू लायंस इन हिमालय? चाइना कहता है। और इंडिया क्या कहता है? हिमालय इज टू बिग, फाइन, टू accommodate India and China. But China says that there cannot be two lions in Himalayas. So anyway, two kings means all confusion and chaos. और दो बड़े लोग साथ साथ रह नहीं सकते हैं। कि रह लेते हैं? नहीं रह सकते हैं। ईगो क्लैश हो जाता है। तो हमेशा क्या होगा? वॉर, फाइन।
So war is a destiny. Whenever you see the rise of powers because of the conflicting aims, the aim of one country is to maintain the status quo and the aim of the other country is to challenge the status quo. So they cannot escape the possibility of war. Though in 21st century, the nature of warfare is different. So right now we are going for hybrid wars. So war between US and China is already happening. Okay. So there is a tariff war, there is a currency war, there is a trade war, there is cyber war. All these wars are happening. When the two countries possess nuclear weapons, then you don't go face to face. Then you find out the alternative ways of war. Okay. So what is the destiny of US and China? War. So right now we are already seeing that war is happening and proxy wars are happening. Fine. Be it Ukraine, be it Horn of Africa, be it Yemen, be it Gaza, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब क्या है? सब प्रॉक्सी वॉर्स है. ठीक है. तो फिर ऐसे लिखो व्हाट इज द डेस्टिनी बिटवीन द टू पावर्स. एक मयान में दो तलवार नहीं रहती. ठीक है. डेस्टिनी के आगे फिर लिखो वॉर. वॉर इज द डेस्टिनी. ठीक है. इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज Thucydides trap. मतलब you get trapped and you cannot escape the war. Okay. And that is the tragedy of great power politics. So you can get short note on Thucydides trap. Fine. So Thucydides trap. What is, ऐसे लिखो, what is Thucydides trap? Right. It is a concept given by American scholar Graham Allison. To predict the future prospects of US-China relations. Since it is inspired by the work of Thucydides, it is called as Thucydides trap.
right? Right. This theory is based on the historical analysis of the wars. Okay, right. Most of the wars have been started by the revisionist powers, because they think that the existing system, existing order does not fulfill their interests to the optimal level, Okay. So if US is powerful and China is also rising, what world should prepare itself for war? And who has a maximum chances of winning the war? लिखो, यूएस नहीं पूछ, ऐसे थियोरी में बात करो, लिखो इनकी थियोरी क्या है, लिखो विच, या ऐसे लिखो who has maximum chances to win the war. ठीक है, right? The party which starts the war. स्पार्टा जीतता थोड़ी, जीत गया, ठीक है? So it is always, you always have first movers advantage in the war. So history shows that those who have initiated the war, they have better chances of winning the war. Fine. So, but there are always exceptions too, because offense is best defense. Fine. And defensive game is not that good. So that's why what do you see? You maximize the chances of war when you start the war, and you find the other party not so prepared. So this is a tendency in Pakistan also. In South Asia, India is a status quoist power and Pakistan is a revisionist power. So what is the destiny of these two countries? War. Fine. And in wars, first movers always have advantage. So you should always be preparing to take the first. So we should not be caught unprepared. Fine. So we should always give surprises. So wars always have element of surprise. Okay. And right now, which type of wars? Of course, it has to be first the low intensity or the wars through non-state actors. So in 21st century, the role of state is not that much. The role of non-state actors. The role of non-state actors or terrorists increase when countries possess nuclear weapons. So right now, war is constant, but the techniques of warfare has changed. So right now, if you want to be very strong,
then you should have non-state actors. Fine. तो every country, आप आज की वॉर टेररिज्म वाली ही वॉर है, ठीक है, आप आज की वॉर फेस टू फेस वॉर नहीं है, और मेरे हिसाब से टेररिस्ट लोगों की भी दुकान ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। टेररिज्म भी क्या है, एक इंडस्ट्री है, ठीक है, और टेररिज्म क्या है, मर्सिनरी सोल्जर्स हैं, इनको जहाँ से पैसा मिलेगा वो पैसा लेके लड़ने लगेंगे। तो अफगानिस्तान ये सब है क्या? अफगानिस्तान एज अ हिस्ट्री ऑफ मर्सिनरी सोल्जर्स, ठीक है। तो टेररिस्ट भाई किसी के नहीं, टेररिस्ट सिर्फ पैसे के हैं, और टेररिज्म एक इंडस्ट्री है। या तो आप वेपन में आत्मनिर्भर हो जाओ या टेररिज्म में हो जाओ, ठीक है। सस्ता इलाज क्या है? टेररिज्म। तो टेररिज्म बट फ्यूचर ज़्यादा नहीं, जिसको बनना है अभी अपना भाग्य अपना ले। क्यों? क्योंकि आगे जाके रोबोटिक वॉर्स होने वाली है। अब रोबोटिक वॉर्स होंगे तो टेररिस्ट को कोई पैसा नहीं देगा, तो सबसे पहले एआई और टेक्नोलॉजी में जो सबसे पहले अनएम्प्लॉयड होंगे वो भाई टेररिस्ट वाले होंगे, क्योंकि इनका काम कम हो जाएगा। तो इस मंच से मैं यही कह रही हूँ, लुक फॉर ऑल्टरनेटिव, बिकॉज द बिगेस्ट थ्रेट आई कैन सी because of AI will be that the countries may not be requiring lot many non-state actors. You agree with that? Because in future the wars are going to be robotic wars, and when robotic wars, the threshold will decrease. Means right now people fear war because it will lead to loss of life. But in time to come, people will start enjoying war. They would like to see the wars because that loss of life will not be there. Is that clear? So that's why in essay they ask that topic of war. So you should also understand how concepts of war are changing. तो भाई बेटर है कि कोई और काम ढूंढ लो, ठीक है। तो टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू नीड टू थिंक, इट इज अ टाइम फॉर एआई, फाइन। सो बेटर डोंट गो टू स्वाट वैली, go to Silicon Valley, fine. So with this I hope you have understood. No? Okay, thank you. ठीक है, आज मेरे मन का विषय है। धन्यवाद।